Hello student, today we discuss some questions on polynomials. These questions belongs to the exercise 2.4 which is optional. ये 2.4 exercise के questions हैं जो cubic polynomial के लिए हैं. Cubic polynomial के लिए हमने पहले डिस्कशन किया था कि there is a relation between the zeros and the coefficients as in quadratic equation. So we discuss some questions. So what is a cubic polynomial? Let a cubic polynomial that is px equals to ax cube plus bx square plus cx plus d. This is a general form of cubic polynomial if alpha, beta and gamma are the zeros, then we have a relation between sum of zeros alpha plus beta plus gamma is minus b upon a, and the sum of the product of two zeros, that is alpha into beta plus beta into gamma plus gamma into alpha, is c upon a, and product of all these three zeros will be minus d upon a. So these are the relation between the zeros and the coefficients of the cubic polynomial. Now here the question number 2 of exercise 2.4, where we have to find a cubic polynomial with sum and sum of the product of its two zeros taken at a time, and the product of zeros are 2, minus 7, minus 14. So to solve this, first we assume the zeros of the polynomial. So there is a cubic polynomial, so let alpha, beta and gamma are the zeros of polynomial px, that is ax cube plus bx square plus cx plus d. So to find the cubic polynomial, we must know the value of a, b, c and d. So here from the given values, we calculate the value or find the value of a, b, c and d. So as we discussed earlier, the sum of zeros, since sum of the zeros, that is alpha plus beta plus gamma, is minus b upon a. And what is alpha plus beta plus gamma? That is sum of zeros is 2. So 2 equals to minus b upon a. Now the second, sum of the product of zeros taken 2 at a time means alpha into beta plus beta into gamma plus gamma into alpha is c upon a. And what is this? Sum of the product of 2 taken at a time, it is minus 7 equals to c upon a. And last, the product of its zeros means alpha into beta into gamma is minus d upon a. So alpha into beta into gamma is minus 14. So it is minus 14 equals to minus d upon a. Now in earlier questions, we make the to get the value of a, b, c and d, we make their denominator equal. But look at here in this question, what is 2? We can write 2 upon 1. Minus 7 can be written as minus 7 upon 1. And minus 14 is written as minus 14 upon 1. So here in denominator they are equal. And here on the right side, a are the denominator. So we equate, on equating the values,
we get what we get? A equals to 1, A equals to 1 in all, minus B equals to 2, this gives B equals to minus 2, C equals to minus 7 and D equals to 14. Minus D is minus 14, so D equals to 14. So now we know the value of A, B, C and D. Now we write, so the cubic polynomial Px becomes, put the value of A, B, C and D. A is 1, means 1 into x square, x cube, 1 into x cube, plus B is minus 2, minus 2 into x square, plus C is minus 7 into x, plus D is 14. So here it becomes x cube minus 2x square minus 7x plus 14. So this is the cubic polynomial. Clear? Now here we take the question number 3rd of the exercise 2.4, where the zeros of polynomial x cube minus 3x square plus x plus 1 are a minus b, a and a plus b. Then we have to find the value of a and b. Here the zeros are given in unknown terms. So to solve such questions, we assume, let Px is a polynomial, that is x cube minus 3x square plus x plus 1. Its zeros are given a minus b, a and a plus b. So to equate this polynomial with general form of the cubic polynomial, so on equating with general form, that is ax cube plus bx square plus cx plus d. Here we take the capital letters, capital A, capital B, capital C and capital D as a coefficient, because in the question A, B are given in, they are zeros. So to make difference between these coefficients, so here A becomes coefficient of x cube is 1, B is minus 3, C is 1 and capital D is 1. So we get the coefficients of the polynomial. Now what we know, sum of the zeros of cubic polynomial is minus b upon a. Now what will be the sum? A minus b plus a plus b. This is equals to minus of b, means minus of minus 3 upon 1. If you solve it, what we have? If we have sum of all these terms, so minus b plus b cancelled, we have a plus a means 3a is equals to minus of minus 3, that is 3. So we get a equals to 1. So now we get the value of a. In the cubic polynomial, we also know the product of the zeros. So product of the zeros will be, that is d upon a. Product of the zeros is minus d upon a. It is minus d upon a. So here product of zeros means a minus b into a plus b will be minus of 1 upon 1. Now if you multiply a minus b with a plus b, it is
in the form of identity. So a square minus b square into a gives minus 1, and from, because we already get the value of a equals to 1. So substituting here, we have 1 square minus b square into 1 is minus 1. So 1 minus b square is minus 1, and transposing the terms, what we have? Transposing the terms, we have minus b square equals to minus 1 and minus 1. 1 को ट्रांसपोज किया आपने, तो ये होगा minus b square is minus 2. So b square equals to 2, and b gives under root of 2. So these are the values of, now what we have, a is 1 and b is plus minus of under root 2. So in this way we can get the zeros which are given in unknown form. Now we take some other questions of polynomials related to zeros of the polynomials. These questions are not in your textbook, but we take such questions for the other questions which is related to zeros. Now what is this? If sum of the squares of zeros of quadratic polynomial fx, that is x square minus 8x plus k is 40, then find the value of k. Now, so how we find it? With the help of zeros. Clear? माने यदि हमको zeros हम के help से हम k की value find करेंगे. Let alpha and beta are the zeros of fx. Quadratic polynomial है, तो इसमें 2 0 होंगे. There will be 2 zeros, alpha and beta. Now what will be the sum of these zeros? So sum of zeros, that is alpha plus beta, is minus b upon a. And what is the value of minus b? Minus of minus 8 upon 1. Here b and a, the coefficients of polynomial. So this becomes 8. Minus of minus 8 is 8 upon 1, that is 8. And product of zeros, that is alpha into beta, is c upon a. So what is c here? That is k upon 1, that is k. So we get the value of alpha plus beta and alpha into beta. यानी यहाँ पर हमने क्या किया? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में ये वैल्यू फाइंड कर ली विद द हेल्प ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड? व्हाट इज गिवन? गिवन दैट द स्क्वायर्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ zeros means alpha square plus beta square is 40. ये हमको दिया हुआ है, sum of the squares of zeros. Now ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसको हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में लिखेंगे. वी राइट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा. सो हाउ वी write this? We have an identity a plus b whole square is a square plus 2ab plus b square. If we transpose 2ab to left side, what we have? A plus b whole square minus 2a into b equals to a square minus b square, a square plus b square. 2ab को ट्रांसपोज कर दिया, तो ये जो फॉर्म है a square plus b square के फॉर्म में है. So this turns to a alpha plus beta whole square minus 2 into alpha into beta is 40. हमने ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिया है. अब ये वैल्यूज आपको मालूम है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इनको पुट कर दें. अल्फा प्लस बीटा इज 8, so 8 square minus 2 into alpha into beta is k equals to 40.
Now this becomes 64 minus 2k is 40. If we transpose 40 to left and minus 2k to right side, what we have? 64 minus 40 is 2k, which is 24 equals to 2 into k, which gives k equals to 12. So this is the value of unknown term, that is k, in the polynomial. Now here is another question, that find a quadratic polynomial where zeros are reciprocals of the zeros of polynomial px, that is ax square plus bx plus c, where a and c are not zero. माने यहाँ पर हमको क्या करना है, एक नया पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है. तो हमको जीरोस मालूम होना चाहिए, बट जीरोस क्या है? दे आर गिवन इन टर्म्स ऑफ द जीरोस ऑफ अनदर पॉलिनोमियल which are the reciprocals of the zeros of this polynomial. इस पॉलिनोमियल के जीरोस के वो रेसिप्रोकल है. तो यहाँ पर ये थोड़ा सा एक नए तरीके का क्वेश्चन है जो अपन यहाँ डिस्कस करेंगे. नाउ लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of polynomial px, that is ax square plus bx plus c. Alpha beta is polynomial के zeros हैं. So what will be the sum of zeros? So sum of the zeros, that is alpha plus beta, will be minus b upon a, and product of the zeros, that is alpha into beta, is c upon a. Sum of the zeros and product of the zeros are known. Now what is the new polynomial? We have to find a new polynomial whose zeros are the reciprocals of this. तो quadratic polynomial फाइंड करने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगी? सम ऑफ द जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस. माने उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का सम हमें चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए. तो यहाँ पर ये अल्फा बीटा जो इसके जीरोस हैं, जो नया पॉलिनोमियल हमें फॉर्म करना है, फाइंड करना है, उसके जीरोस क्या होंगे? रेसिप्रोकल्स ऑफ दिस, रेसिप्रोकल्स ऑफ these zeros. So the zeros of new quadratic polynomial which we have to find, that is of let fx, जो हमें फाइंड करना है उसको हमने fx लिया हुआ है. तो इस fx के zeros क्या होंगे? are 1 by alpha and 1 upon beta. ये क्या होगा? 1 upon alpha is the reciprocal of alpha and 1 upon beta is the reciprocal of beta. ये given है reciprocals. तो इनके reciprocals ये हैं. हिंदी में इसको व्युत्क्रम बोलते हैं, व्युत्क्रम. तो यहाँ पर 1 upon alpha 1 upon beta इसके जीरोस है. तो अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए इनका सम मालूम होना चाहिए, इनका प्रोडक्ट मालूम होना चाहिए. Now sum of zeros, so therefore sum of the zeros will be 1 upon alpha plus 1 upon beta. इनका सम निकालेंगे और इसको हम सॉल्व करें तो ये बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा होगा. और अल्फा प्लस बीटा अभी हमने फाइंड किया है, कितना है? माइनस बी अपॉन ए एंड अपॉन अल्फा इंटू बीटा. अल्फा इंटू बीटा क्या? सी अपॉन ए. और यहाँ डिनोमिनेटर से ए कैंसिल होगा, ये होगा माइनस बी अपॉन सी. सो व्हाट वी गेट? द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल व्हिच वी हैव टू फाइंड, दैट इज माइनस बी अपॉन सी, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द zeros, that is 1 upon alpha into 1 upon beta.
So simplifying this, we get 1 upon alpha into beta. Now put the value of alpha into beta, that is 1 upon C upon A. 1 upon alpha into beta is what? C upon A. And simplifying this, it becomes A upon C. So we get the value of product of the zeros. Now once we know the sum of zeros and product of the zeros, then we can easily write the polynomial. So C is what? We can discuss in two ways. C is the coefficient of x square. B is the coefficient of x. And A becomes the constant term. Remember that. Because sum of zeros is minus of coefficient of x upon coefficient of x square. And from the product of zeros, A upon C. A is the constant term upon coefficient of x square. So here, so the quadratic polynomial become a polynomial, that is fx equals to, you can direct write c into x square. C means the coefficient of x square minus of, or you can write plus cx square plus b into x plus a. Is that clear? Now here this is the polynomial fx. Now we can write the same polynomial in another way. Means the quadratic polynomial is fx is x square minus sum of zeros into x plus product of zeros. ये भी एक तरीका है पॉलिनोमियल फाइंड करने का. एक तो हमने कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके निकाल लिया, दूसरा हम इस तरीके से सम और प्रोडक्ट का डायरेक्ट यूज करके भी पॉलिनोमियल लिख सकते हैं. वो क्या होगा, अब यहाँ हम वैल्यू पुट कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस, जो कि कितना था माइनस बी अपॉन सी, माइनस बी अपॉन सी इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या है, ए अपॉन सी. अब यदि हम इसको सॉल्व कर लें तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करने पर होगा सी एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ अपॉन में 1 है, इन सभी में अपॉन में सी है, तो सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए अपॉन सी. और सी को यदि हमने बाहर लिखा हुआ है तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए. ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स हो गया. अब आप इसको, इस पॉलिनोमियल को इससे कंपेयर करें तो आपको ये ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट तो सेम मिल गया, लेकिन आपको यहाँ ये 1 अपॉन सी एक्स्ट्रा दिख रहा है. तो ये इट इज नथिंग बट अ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. जो हमने पहले कहा था कि किसी भी पॉलिनोमियल में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर उसके जीरोस में कोई चेंज नहीं आता. तो ये दोनों तरीके हैं आपको पॉलिनोमियल्स को लिखने के. ये डायरेक्ट है, ये दूसरे तरीके से. तो ये जो क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए हैं, ये आपको पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो और भी क्वेश्चंस हैं जो रेफरेंस बुक्स में दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करने में आपको हेल्प करेंगे. तो डेफिनेटली आप क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, आप रेफरेंस बुक का यूज़ कीजिए. बहुत सारे राइटर्स की बुक्स अवेलेबल हैं, उनको आप फॉलो कीजिए. और इसके बाद भी पॉलिनोमियल्स में कोई आपको डिफ़िकल्टी है तो उसको आप पूछिएगा. नेक्स्ट वीडियोस में हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे.